welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which I give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm V Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Sensex climbs 222 points to hit a fresh record high. Nifty adds 49 points, but rupee slips 28 paise against the dollar. India gains $755 million in additional exports to the US in the first half of 2019. And Petroleum Minister Dharmendra Pradhan says government on track to meet the target of cutting India's oil import dependence by 10%. सेंसेक्स 222 अंक बढ़कर ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निफ्टी में 49 अंकों की बढ़त आई, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट में रहा। वर्ष 2019 की पहली छमाही में भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात में 75 करोड़ 50 लाख डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हुई। और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार भारत की तेल के आयात पर निर्भरता में 10% कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठीक पथ पर है। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 0.6% की तेजी से 222 अंक बढ़कर 40,470 के रिकॉर्ड समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.4% की तेजी से 49 अंक बढ़कर 11,966 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.2% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। At the stock market, the Sensex advanced 222 points, 0.6% to end at a record high of 40,470 today. The Nifty at the National Stock Exchange climbed 49 points, 0.4% to 11,966. In the broader market, the BSE mid-cap index gained 0.2%, but the small-cap index fell 0.4%. Among sectoral indices on the BSE, the realty index was the leading gainer, climbing 1.6%. The Bankex advanced 1.4%. The metal index gained 0.7%. The IT index rose 0.5%, the capital goods index added 0.4%, and the healthcare index inched up 0.3%. Among the declining sectoral indices, the consumer durables index plummeted 5.3%, the telecom index declined 2.7%, and the oil and gas index shed 0.2%. Among realty stocks, Indiabulls real estate jumped 5%, Sobha climbed 4.4%, DLF advanced 4.1%, Godrej Properties added 3.5%, Prestige Estates rose 3.1%, Suntech Realty gained 1.6%, Oberoi Realty moved up 1%, and Mahindra Lifespace Developers inched up 0.3%. Among private banks, ICICI Bank climbed 2.6%, RBL Bank rose 1.9%, IndusInd Bank gained 1.7%, HDFC Bank added 1.4%, Axis Bank moved up 1.3%, Kotak Mahindra Bank rose 1.1%, Yes Bank added 0.6%, and Federal Bank inched up 0.3%. Among public sector banks, Bank of Baroda fell 2.4%, IDBI Bank dropped 1.2%, PNB shed 0.9%, Bank of India lost 0.6%, and SBI slipped 0.5%, but Canara Bank rose 2%. AKB, if you look at the market, almost a 9-day streak, if you leave out that one day when it fell. Would you recommend investors to be cautious or cautiously optimistic? I think they should be cautious because the time for optimism has not yet arrived. This is the market that will remain volatile for some time to come. What you see in today's market is actually a reflection of the economic developments of the last couple of days. If you look at what has happened to the realty stocks, I think realty stocks are responding to what the Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, announced in Bombay yesterday about a new package of incentives, whatever they may be, for the realty sector. I think the realty stocks are responding to that. If you look at the telecom stocks, they are a little depressed. Once again, they're reflecting the news of the day, which is
that the Supreme Court judgment that had ordered a payment of around 92,000 crore of rupees to the government by way of adjusted gross revenues. So the telecom stocks are responding to that. And if you look at the banking sector, there's a clear segmentation, private and the public. The private banks are clearly ahead of the public sector banks. But one PSU bank gave a wonderful result. Even the public sector bank, the banks which are doing well, those who have taken the merger impact well, and that's the Canara Bank we were referring to. No, SBI from 250 to almost 320. Yeah, but SBI today did not do that well. But the Canara and SBI have been maintaining their surge ahead, and private sector banks are doing well because they're clearly cleaning up their books much faster. And ICICI Bank in particular had seen some problems last few weeks, and now they've recovered. They say in the markets that markets always buy the rumor and sell the news. So this euphoria that we have seen in almost the last 10 days, is it based on something, probably an expectation of BPCL being privatized or some big ticket privatization happening, something that the market thinks will happen in the next 6 months? Well, let me say that the markets are also responding to, with some relief, the news that India has pulled out of RCEP. I think large numbers of MSMEs who are suppliers as well as buyers of goods from large number of these listed companies are probably really relieved that the kind of competition and the import competition in particular that they would have had to face if India had signed RCEP, I think that news has been internalized with the stock market in a positive sense. So you are saying that although the anticipation would already have been there that probably India would have signed the RCEP, so not signing has come as a big relief. Absolutely. Briefly, I'd like to ask you here, because RCEP has not been discussed as much in Market Mantra so far. What is the impact of RCEP on a country like India, especially from a stock market's perspective? And do you think that how this would pan out in the next I think 6 to 12 months? in the immediate or the short term, India pulling out of RCEP will be positive, as you can see it now, that the stocks that were sensitive, particularly the dairy stocks or take the agricultural product stocks or even the industrial goods manufacturing companies, I think they are clearly the beneficiaries. But in my view, the stock market response is an immediate response. Over the years, I think, or the medium term, the stock market will also realize that India pulling out of RCEP is probably a process that will not make them efficient and competitive in the medium to long run. So whatever gains you may see now will probably get redefined and capped at a certain level. So in the immediate short run, it's a gain for RCEP in the stock market point of view, but in the medium to long term, I don't see that gain to be sustained. And from an overall macroeconomic perspective, I think without basic factor market reforms and efficiency gains being ensured through policy changes, entering RCEP at this stage probably would have caused some grief to many players. But in the long run, I think India's joining RCEP would have been a positive for a trading nation like India, which is very important to being a strong manufacturing power. So Mr. Bhattacharya आप कह रहे हैं कि भारत को अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी थ्रू मे बी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ताकि वो बाकी नेशन से compete कर पाए और ऐसा ना हो कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं का मार्केट उनसे छिन जाए. आपने एकदम सही कहा. और जो एक RCEP मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे देश के एक अंदरी विकास और सुधार के लिए. और मैं समझता हूँ कि RCEP अगर हमारे देश की अर्थनीति की जो कई नीतियाँ जो हैं उनको सुधार में जल्दी लाने की अगर फैसिलिटेट करती थी, मैं मानता हूँ RCEP एक अच्छा स्टेप होता था. पर अगर हम ये देखें कि RCEP से सिर्फ हमारी जो आयात जो हैं वो बढ़ गई हैं, पर हमें एक सक्षम एक अर्थनीति की तरफ हम ले जाने में ये कामयाब ना हुई, तो मैं मानता हूँ कि RCEP को हम दूसरी तरफ से देखेंगे. पर इस वक्त जो हुआ है वो कि भारत RCEP से बाहर इसलिए आया है क्योंकि
चाइना के जो डिमांड्स जो थे वो डिमांड्स भारत के लिए मुश्किल थे कि वो मान लें, क्योंकि चाइना के जो के पास जो इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट जो गई थी वो रिक्वेस्ट से कोई पॉजिटिव रिस्पांस उस वक्त नहीं आया था। हालांकि खबरों में अब आ रही हैं कि चाइना कह रही है कि हमसे भारत से वो बात कर सकेगी। और जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, जैसा भी मेरे को एंकर कह रहे थे कि एक लगातार हम बढ़त देख रहे हैं पिछले 9 दिनों से। इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, 40,470 पे आज पहुंचा है सेंसेक्स। क्या लगता है आपको, क्या ये कुछ फंडामेंटल्स पर भी बेस्ड है या कहीं ना कहीं कुछ स्पेकुलेटिव बबल क्रिएट होने की आशंका आपको दिखाई देती है? नहीं, मैं इस वक्त ये नहीं समझता कि कोई स्पेकुलेटिव बबल की कोई आशंका हम इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं मेरे हिसाब से कि जो आपकी जो अर्थनीति की जो इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स थे वो पिछले 1 साल तक काफ़ी स्ट्रेस से गुजरे थे। और अगर आप सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स देखें और अगर थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन जो आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ जो एस्टिमेट जो आ रही है वो पहले से ज़्यादा है। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी अच्छी नहीं हो रही है, सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, पर जो बॉटम लाइन जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, उसमें ग्रोथ एवरेज तो मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल से डबल डिजिट में आ गई है, 9 से बढ़कर 11% तक आ चुकी है। तो ये जो एक इंडिकेशन जो आ रहा है, और अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट जो देखें कि जो कैश सिस्टम में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कैश की डिमांड है, इसका मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की लोगों की, शायद एक इकोनॉमी में एक थोड़ी बहुत ग्रीन शूट्स लगने को दिख रहा है। और उधर अगर आप देखें डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत बोलबाला जारी है, लेबर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जो तेल की जो एक प्रॉब्लम थी दामों में उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो ऑन द होल जो शॉक्स जो आ सकते थे इकोनॉमी में वो कम है, और उसी के लिए आशा का एक संचार हम देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बॉटम लाइन इंप्रूव हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ है, उससे काफी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। क्या लगता है आपको, टॉप लाइन इंक्रीज हो यानी कि डिमांड बढ़े, जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं वो बढ़े विभिन्न कंपनियों की विभिन्न क्षेत्रों में, उसके लिए क्या कुछ और कदम आपको लगता है एज एन एक्सपर्ट उठाए जा सकते हैं सरकार द्वारा? क्योंकि सरकार ने हमेशा जोर दिया है कि हमें डिमांड क्रिएट करने पर हमारा फोकस है। अब देखिए, जो हमारी जो डिमांड की जो कमी है अर्थनीति में, वो कमी हमारी जो इकोनॉमी की जो उचला हिस्सा है उससे नहीं हो रही है। ये जो निचले हिस्से से हमारी डिमांड की कमी आ रही है, वो हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण अर्थनीति है उसमें इतना स्ट्रेस आ गया है। एग्रीकल्चर की बात की, रूरल लेबर की बात कीजिए, तो उसमें डिमांड की कमी ज़्यादा दिख रही है, और ना कि जो हम 100-150 मिलियन लोग जो उचले हिस्से में रहते हैं उनसे आ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि इस डिमांड में बढ़ोतरी के लिए सरकार को शायद जो नरेगा जैसे प्रोग्राम या प्रधानमंत्री किसान योजना जैसे प्रोग्राम, उसमें और भी निगरानी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा मेरे ख्याल से। और ऑलरेडी हमने जो आंकड़े जो बाहर आ रही हैं उसमें नरेगा में बहुत ज़्यादा एलोकेशन इस बार किया गया है। एलोकेशन तो ठीक था वही, पर उसमें डिसबर्समेंट ज़्यादा हो गया है। पीएम किसान में जो पहले 2 किस्त जो थे, किस्तों में काफ़ी उन्होंने प्रेशर दिया जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा आए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी और 2 कदमें ली जाएं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से डिमांड मांग की एक बढ़ोतरी आ सकती है, उससे हमारी अर्थनीति में फायदा हो सकता है। AKB, you mentioned rising corporate profits in some of the companies, and we have some reports coming. Canara Bank, which is a state-owned Canara Bank, has reported a rise of 14% in its consolidated net profit at 405.5 crore rupees for the second quarter. The bank witnessed a fall in its bad loans proportion, with net NPAs coming down to 5.15% from 6.54%. And of course, the markets gave it a thumbs up with a 2% rise in the share price as well. If you look at the pharma sector, Cipla posted 25% increase in consolidated net profit at 471 crore rupees for the second quarter. That again was rewarded with a 3% price rise in the share market. And
Lupin Labs has reported a consolidated net loss of 123 crore rupees for the second quarter due to provisioning of one-time payment to settle a lawsuit in the US and loss and divestment of injectables business in Japan. Again, Lupin moved up by almost 0.5% in the market. उधर बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बताया कि कंपनी को इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 32 करोड़ 50 लाख रुपए का संकलित शुद्ध घाटा हुआ। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को लगभग 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने जानकारी दी कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उनका संकलित शुद्ध लाभ 28.4% की गिरावट दर्ज करता हुआ 414 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में अपना संकलित शुद्ध लाभ 15.6% बढ़कर 247 करोड़ रुपए हो जाने की सूचना दी है। अगर हम चले करेंसी बाजार की ओर तो रुपए में आज डॉलर के मुकाबले 28 पैसे की गिरावट आई और एक डॉलर की कीमत 70 रुपए 97 पैसे दर्ज हुई। रुपए में क्या कहेंगे आप, आज जो गिरावट आई है ऐसे दिन जब बाजार में खासी उछाल आया है, क्या इसके कारण है, क्या संकेत देते हैं? देखिए, रुपए के जो उतराव और चढ़ाव में जो फैक्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के साथ ज़्यादा उनका लिंकेज नहीं है। रुपए का मार्केट थोड़ा सेग्रीगेटेड मार्केट है, उसमें हमारी देश की अर्थनीति की एफिशिएंसी की डिपेंड करती है, देश की जो डॉलर की जो मांग है और कितनी उनकी सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं समझता हूँ कि आज की जो स्थिति जो है, जो रुपए की जो मूल्य जो है, डॉलर की जो मूल्य है, वो मैं मानता हूँ कि रुपए के लिए थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग है वो। जो अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से आप इससे तुलना करेंगे, अभी भी रुपए में थोड़ी बहुत कमज़ोरी आने के बाद भी कोई हमें शंका या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर रुपए की जो मूल्य अगर डॉलर की तुलना से अगर कम हो जाए तो हमारी जो निर्यात की जो संभावनाएं वो बढ़ सकती हैं। तो मैं मानता हूं कि रुपए का ये कुछ पैसों का जो नीचे आ गया है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, बल्कि ये अर्थनीति के लिए एक शुभ संकेत भी हम कह सकते हैं इसको। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते की उम्मीदों के बल पर एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 0.2% बढ़ा। हांगकांग के हैंगसेंग में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहे, लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा। यूरोप की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के बाजारों में मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.3%, फ्रांस का कैक 0.1% और जर्मनी का डैक्स 0.2% की गिरावट पर थे। इस आशावाद के बल पर कि अमेरिका और चीन हानिकारक व्यापार युद्ध को सुलझाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कल रात अमेरिका के 10 वर्ष की अवधि वाले सरकारी बॉन्डों पर ब्याज दर 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1.873% पर जा पहुंची और जर्मनी में 20 साल की अवधि वाले सरकारी बॉन्डों पर ब्याज दर 3.5 महीने में पहली बार सकारात्मक हो गई, यानी 0 से ऊपर चली गई। If you look at the US market on Wall Street, the benchmark S&P 500 edged lower yesterday as investors paused in the wake of a rally buoyed by hopes of a trade deal between the United States and China. Investors have also shown caution and now pushing up value stocks over growth names in the last few sessions. The Russell 1000 Value Index has climbed nearly 2% in the past 3 sessions compared to a gain of 0.8% for the Russell 1000 Growth Index. Meanwhile, keeping some tentativeness intact, China is pushing President Donald Trump to remove more tariffs as part of the Phase 1 deal, which may be signed this month, according to latest reports. So the Dow Jones Industrial Average rose 31 points or 0.1% to end at 27,493. The Nasdaq Composite ended marginally higher at 8,435, but the S&P 500 lost 4 points or 0.1% to 3,075. Over 3/4 of S&P 500 companies that have reported results so far have beaten profit expectations, definitive data showed. Meanwhile, data yesterday showed the reading on the ISM Services Index improved to 54.7 in October from 52.6 in September, according to economists polled by Reuters, easing concerns that a slowdown in the manufacturing sector was spreading to other parts of the economy. Almost 18 months ago, AKB, when Trump had initiated steel and aluminum tariff actions against China, he had said trade wars are good and so easy to win. So 18 months later, when they're trying to close the phase 1 of this purported deal that they would probably come, has it been easy for US? Well, it has not been easy, but not bad either.
what we have seen is the manner in which he's conducted these negotiations, almost blow hot and blow cold manner. I think he has managed the expectations, and I would say that both China and US have engaged in consultations right through. And today we have a situation where China and the US are talking, and they are more or less agreeable to a new kind of framework by which the tariffs will probably be gradually removed on a section of the trade. So I think these are trying times. But even within these trying times, you do see that there are signs of new uncertainties are emerging, that this is the way things will happen. And what I do see is that in spite of this US-China tariff war, the US companies are doing well. The European economy, which should have been impacted, I think they are not as badly off as we thought initially. So I do see overall the global economy is probably seeing some easing up of sorts. So if you had asked this question to me about 6 months ago, I would have been very, very pessimistic. But today it seems that despite all that has happened to the global economy, the major economies of the world, you see that growth continues to be seen as 3%, although it is lower than 3.2%. In fact, you mentioned that growth is continuing in corporate profits. Absolutely. US is doing is amazing bull run of almost a decade now. How long do you think the US markets will continue? It's almost 10 years now. Yeah. So, and everybody says that this is probably going to be the longest bull run in the US ever. और संक्षेप में मिस्टर भट्टाचार्य कहा जा रहा है कि जो ये डील होगी, जो पार्शियल डील होनी है, उसमें चाइना प्लेज करेगा कि वो यूएस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपने इंक्रीज करेगा, उसकी परचेज, अपने युआन को स्टेबल रखेगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको करेगा, उनका ध्यान रखेगा. तो आपको लगता है कि दैट विल बी अ विक्ट्री फॉर अमेरिका? ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव यही था. अमेरिका का जो ओरिजिनल पॉइंट जो थे, जैसे आपने अभी कहा कि एक तो था कि उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और दूसरा था कि उनके करेंसी मैनिपुलेशन के चार्जेस जो थे, और दोनों जगह ने चाइना ने अमेरिकन सरकार के सामने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हथियार फेंक दिए हैं. तो मैं मानता हूं कि यूएस के लिए एक जीत कह सकते हैं आप, और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी अगर ठीक से नहीं चलती है और भी अगर टर्बुलेंस में जाती, मैं मानता हूँ हमारे भारत जैसे देशों के लिए हमारी एक्सपोर्ट आउटलुक में और भी हम कठिनाइयाँ आती, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल होती और भी, तो हमारी अर्थनीति भी संभली हुई है. इनफैक्ट आपने एक्सपोर्ट्स की बात करी तो बहुत ही अच्छी खबर है, इसी से बिल्कुल जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई. यूएन व्यापार और निवेश संस्था के एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से व्यापार पथ में आए बदलाव के चलते वर्ष 2019 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को लगभग 75 करोड़ 50 लाख डॉलर का अतिरिक्त निर्यात किया है. चीन पर अमेरिकी शुल्कों के व्यापार पथांतरण प्रभावों से जुड़े इस अध्ययन से पता लगा है कि मौजूदा अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से द्विपक्षीय व्यापार में भारी गिरावट आई है, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़े हैं और व्यापार युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त नहीं होने वाले देशों से आयात बढ़ गया है. अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 की पहली छमाही में अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध से होने वाले व्यापार पथांतरण की मात्रा लगभग 21 अरब डॉलर है. चीन पर अमेरिकी शुल्क लगने से ताइवान, मेक्सिको और यूरोपीय संघ को महत्वपूर्ण फायदा हुआ है. कोरिया, कनाडा और भारत को तुलनात्मक रूप से कम, लेकिन फिर भी 0.9 अरब से लेकर 1.5 अरब डॉलर का अच्छा फायदा हुआ है. 2019 की पहली छमाही में भारत से अमेरिका जाने वाले 75 करोड़ 50 लाख डॉलर के अतिरिक्त निर्यात में विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसायन, धातु और कच्चा धातु, बिजली मशीनरी और अन्य मशीनरी के अलावा कृषि, खाद्य, फर्नीचर, ऑफिस मशीनरी, प्रिसीजन उपकरण, कपड़ा, सिले सिलाए कपड़े और ट्रांसपोर्ट उपकरण से जुड़ा सामान शामिल है. सो डेफिनेटली भारत को भी फायदा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में हमारे बढ़ोतरी हुई है. जरूर बढ़ोतरी हुई है, पर हमें इसको एक सामग्रिक परिप्रेक्ष्य
स्प्रेडशीट में देखना होगा कि भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल ट्रेड है वो हम करीबन $50 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं. वो हमारे दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उस देश, ऐसे देश को. और वहाँ से वो जो हम जो उनसे आयात करते हैं वो करीबन 36 ऐसा है बिलियन है. अगर आप देखें 50 बिलियन में से अगर मान लीजिए आधे साल में 6 महीने में हमने 755 मिलियन की बढ़ोतरी हमने की है, इसका मतलब सालाना ग्रोथ हुआ 3%. जी, एक ट्रेंड है, इम्पोर्टेंट ट्रेंड है. इंडस्ट्रीज में है और इंडस्ट्रीज है, वाइड स्प्रेड है. पर चाइना से जो डाइवर्ट हुए, जो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स, वो कितना हमारे पास आया है वो अभी डिटेल डेटा के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा. पर ये 3% वृद्धि जो मैं समझता हूँ, चाहते हैं कि इसको और भी बढ़ाना चाहिए. In fact, since 2015, we have been talking of a $500 billion bilateral trade between India and US, and we are currently around $100 billion. So, is there a missed opportunity there? I mean, if I think the last 4 years have been very good as well as very challenging. Even the deficit has been now in our favor. Yeah. So India is $35 billion, and actually there are charges against India that there should be duties on opening up, and you please allow a lot more US goods to come into the country. I think Harley Davidson, and I think it is important that in trade we must realize that trade prospers only when there is both buying and both selling. So protectionism, we should be avoiding protectionism, and that's a very important message from what has happened to the US right now. And one thing we buy a lot is oil. The government is on track to meet the target of cutting India's oil import dependence by 10% by 2022. Petroleum Minister Dharmendra Pradhan today said further the dependence can be cut to half by 2030, he said. But with consumption growing at a brisk pace and domestic output remaining stagnant, India's oil import dependence has risen from 82.9% in 2017-2018 to 83.7% in 2018-19, according to Oil Ministry's Petroleum Planning and Analysis Cell. The minister said blending of ethanol and petrol had risen to 6% at present, and the blending would further rise to 10% by 2022. Simultaneously, 5,000 compressed biogas plants are being set up that will convert agriculture and municipal waste into fuel. अब तेल पे नजर डाल लेते हैं. Let's look at the oil market as well. Global crude oil prices fell today, pulled down by larger than expected build-up in the US crude stocks and weak Eurozone economic figures. So Brent crude oil futures fell 43 cents to trade at $62.53 a barrel. US crude oil futures dropped 34 cents to $56.89 per barrel. US crude inventories rose 4.3 million barrels in the week ended November 1 to 440.5 million barrels, the American Petroleum Institute said yesterday. This upcoming Aramco thing that is coming in December, Saudis would try to show their dominance in the market by probably looking at a $65 or a $66 rate. They would, but the situation in the global petroleum market is such that I don't think it will be offset by shale. Exactly. So I do see that crude oil prices with the kind of the reserves that the US has will be very difficult to reach that level which will make Aramco चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में सोना 301 रुपए सस्ता होकर 38,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी 906 रुपए लुढ़ककर 46,509 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा. मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. नमस्कार. Thank you, AKB, for that stimulating discussion. Before we close, a reminder of the headlines. Sensex climbs 222 points to hit a fresh record high. Nifty adds 49 points, but rupee slips 28 paise against the dollar. India gains $755 million in additional exports to the US in the first half of 2019. And Petroleum Minister Dharmendra Pradhan says government on track to meet the target of cutting India's oil import dependence by 10%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.